I think it. Oh, now it Okay. is. Sorry. Okay. Yeah. Good morning, everyone. Today we have topic will or wasiyat. So will or wasiyat emphasis where we are not in world. When we are not in world, so what will happen? Whatever we have earned, because everyone earn different kind of asset, like tangible asset, intangible asset, some financial asset, some other market security asset. So everyone is investing in mutual funds, share, bank, FD, real estate. Okay. Right now, it is the another class is the generated that is called the digital asset. Digital asset is suppose that I have the YouTube channel and I have the subscriber of the millions, and every month I am earning 1 lakh, 2 lakhs, 5 lakh rupees from my YouTube channel. So that is considered as the digital asset. So there are lots of the digital asset in the today's scenario. It's working. Like I'm writing a blog, my website become the hot cake. So there are the different kind of the digital asset. So whatever asset I have, like mutual fund, real estate, share, digital asset, tangible asset, intangible asset. So when I'm alive, then I can appropriate whatever the income is coming from all asset. I can make manage where this amount will be given, like for my family, for my friend, for my society. But once I have left this world, so what will happen? Ki my family member will start struggling. Ki my father was giving the every month 10% to the charitable trust, or he is donating 10% in society. My kids is thinking it is the waste of time, it is the waste of money. I don't want to give any donation. So what will happen? No, whatever I have created roadmap to give some part of my wealth to society, that will be the stop my death. So if I have created my will, and in will I have given the direction, suppose that I have the total net worth of the 1 crore, 2 cr, 50 lakhs, 10 lakhs. So only 10% of the my total asset will be distributed to who require that particular money. Okay, whether I can be distribute my successor, they can distribute as the blanket, they can provide some food or anything. I'm not saying ki, what kind of the assistant right now. So if I have taken decision ki my 10% of the total wealth will be distributed to all those. Okay, so that we have to understand. So that is the importance of the will. Ki when we are not in world, so how it will be important. And if we have not drafted, we have not initialized, we have not taken the a step towards the will, so what will happen? So today we are going to discuss all those things. So we will discuss about 3W of will. When we have to draft, what is the need and who can prepare. एलिमेंट ऑफ विल, एक विल में क्या क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी एलिमेंट, लाइक विल कैन वी रिटेन, विल कैन वी ओरल, और व्हेन वी आर राइटिंग विल, तो उसमें ऐसा क्या है कि मैं एक पेज पर लिख दूं या एक लाइन लिख दूं, मतलब हाउ आई कैन मेक द इफेक्टिव विल. तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ विल. सपोज दैट मैंने विल लिखा और लिख दिया कि पूरी इंडिया का प्रॉपर्टी मेरे बच्चे को दे दिया जाए, तो वेदर इट इज द इफेक्टिव विल? नो, क्योंकि पूरा इंडिया का प्रॉपर्टी मेरा प्रॉपर्टी ही नहीं है. आई हैव रिटन ताजमहल मेरे बेटे को दे दिया जाए, तो ताजमहल डजंट बिलोंग टू मी, तो वो इफेक्टिव बिल हो ही नहीं सकता. तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी हैव टू राइट, सो दिस विल बी इफेक्टिव एंड लॉफुल, so my whole property and whatever the written in will be easily executable. So that we have to understand. So I will provide some bonus tips to you. Taxation of will, when you are getting some money from any other will, or whatever the property you have and you are transferring to your kids, your sibling, your parent, or anyone, so what will be the taxation transaction in their hand. एंड इन लास्ट असेट ऑफ विल, कि एक असेट में कौन कौन सा विल होना चाहिए, लाइक एफडी है, म्यूचुअल फंड है, रियल एस्टेट है, तो व्हाट वी हैव टू मेक द ट्रांजेक्शन.
So before starting anything, we have to just got the uh, word by word meaning of will. The meaning of will is called legal declaration a person makes about the way they want their property managed or distributed after their death. It means will is the legal declaration. एक ऐसा पेपर है, एक ऐसा डिक्लेरेशन है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है that person makes कि एक बंदा मैं बनाता हूँ what the way want whatever I have the property, it can be tangible, it can be intangible, it can be digital, it can be any kind of financial asset. Okay, they want to their property managed or distributed after their death. मतलब मेरे जाने के बाद how it will be distributed, as I have the said earlier कि मैं चाहता हूँ कि 10% of the total property will be distributed in society और एक particular charitable trust और एक particular hospital और anyone. Okay, and 90% will be distributed with my kids, with my spouse or anything. Okay, so that is the legal will is the legal declaration a person makes about the way they want their property managed or distributed after their death. कि मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाएगी, ये एक डिफिनीशन है विल का और यही मतलब भी होता है विल का. तो आई थिंक यहाँ तक देयर इज नो इशू टू अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज द विल एंड व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ विल. नाउ so today we are going to discuss about some more important thing like importance of will क्या है and why we have to draft. There is a some myth like we have the myth like I am doing job and will is the prepared only by the business owner or anyone who has the worth of the 100 cr, 200 cr, 500 cr, 1000 cr. So that is the important for their that particular person. I have the property, one house property है, दो बेटा है, मेरे जाने के बाद दोनों आपस में बांट कर लेंगे. There is no need of will. Okay, so that we will understand कि what is the myth of will and income tax impact on the will asset. Suppose that whatever the asset I am transferring to my kids, my spouse or my sibling, so whether it will be the taxable, whether it is the exempted, and suppose that my mama ji has no kids and मैंने उनको मतलब I have given the lots of the support whole life and he has given the whole property में से suppose that he is the property of the 5 cr, so he has transferred the 2 cr to me और 3 cr to मामा जी के सिबलिंग और उनके बच्चे को दे दिया. तो whatever the property as coming to me from any other will, so whether it is the taxable, if it is the taxable, so it is the 30%, it is the 40%, it is the 20%. So that we will understand what is the income tax impact. और we are not going to today discuss कि कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा तो कोर्ट में कैसे करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट हियर टू डिस्कस अबाउट द लीगलिटी कि एनीवन हैज चैलेंज द विल, so what will happen. Just we are going to discuss about कि whatever the step we can take before will and what is the need to take this step. So before that, just I want to confirm to you कि suppose that I am head of family, I have 2 sons, I have 1 daughter, wife. Okay, तो जब तक मैं जिंदा हूँ I can take my own decision and I can solve all dispute of my family. मतलब कि जब तक head of family is alive, so there will be no such as the dispute. Suppose that my son is also 20, 22, 30, 35 and all are the married and all son is interested to get the distribution of family. So I will take decision whether it is a good step, it is a right step, right now it is important or not. कि मान लो कि any son is saying कि papa you are just favoring the first son, elder son, but you are not favoring to me. So that I can understand कि why you are thinking whether I have given any advance to you or whether I have provided the study or not. Suppose that कि elder son में मैंने आउटसाइड इंडिया भेजा 25-50 लाख खर्च किया और सेकंड सन में मैंने बोला कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो. So if there is a such kind of the any dispute or I have provided a 2 factory to my son or 2 house to my son and son 1 son 2 just I am providing the 1 house, then it can be the problem if the arise and I am alive. Problem is arisen or I am alive, so I can solve. But जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, I am not alive, so dispute cannot be solved because there is no head of the family. So
ये डिस्प्यूट फिर कहाँ जाएगा, आपस में अगर सॉर्ट आउट हो गया तो इट्स ओके, अदर मोस्टली केस में इट इज नॉट ए सॉल्व, और दे विजिट कोर्ट, और कोर्ट में 4 साल 5 साल लगना कोई बड़ी बात नहीं है, एंड बोथ पार्टी हैज टू स्पेंड लॉट्स ऑफ द टाइम, लॉट्स ऑफ द मनी, along विथ टाइम और मनी के साथ क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाएंगे कि पापा से इसने ज्यादा गलत तरीके से लिखवा लिया, ये दूसरा बोलेगा नहीं पापा का ढंग से ख्याल नहीं रखता था, तो व्हाट विल हैपन, व्हाट एवर यू हैव क्रिएटेड रेपुटेशन इन योर इन सोसाइटी, दैट विल बी द जस्ट डिस्ट्रॉय one, your money has been destroyed because you have to pay the advocate fee, your time will be destroyed, and whatever you have the earned reputation for your family. So if you want to save money, time, reputation, then you have to think what is the need of will and how you have to create so your reputation of family can be solved, can be store, restore, or can be saved. So that you have to understand. There is the one picture I am showing with you. That is the picture of the very famous industrialist of India, Dhirubhai Ambani, Mukesh Ambani, and Anil Ambani. So Dhirubhai Ambani has left world in 2004. Before 2004, anyone in India can say कि there is some dispute in family. 2004 से पहले, इनके डेथ से पहले nobody can say कि इनके घर में कोई डिस्प्यूट है और दोनों भाई में कभी कोई लड़ाई हो सकता है, कभी झगड़ा हो सकता है, बट जैसे ही धीरू भाई अंबानी का डेथ होता है तो धीरे धीरे 1-2 महीने में दैट dispute has been arisen and everyone in India has got the information, they got news कि दोनों भाइयों में नहीं बनता, लीगल केस चला और बाद में जाके पूरे फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो जो चीज आप और हम जान रहे थे बिफोर 2004 से पहले कि यहाँ पर देयर इज नो सच एज द डिस्प्यूट, देयर इज नो सच एज द डिस्प्यूट, लेकिन 2004 के बाद जैसे ही इनका डेथ हो जाता है तो एवरीवन इज नो कि देयर इज नो हैप्पीनेस इन देयर फैमिली। तो व्हाटएवर द रेपुटेशन हैज अर्न्ड बाय द धीरू भाई अंबानी दैट हैड बीन द लॉस्ट, क्योंकि 2004 से देश से पहले सब जानता था कि बहुत अच्छी फैमिली है, ये है, एक्स है, वाई है, जेड है, बट नाउ व्हाट हैपेंड कि आपका सारा का सारा जो whatever you have the earned reputation in eyes of the Indian public has been lost. तो पैसा गया, reputation गया, and again have the seen the one more industrialist that is the Vijay Singhania, owner of the Raymond Group. He has transferred whole share to Gautam Singhania. 10,000 crore का प्रॉपर्टी था, he has transferred to his son, and उसके 6 महीने के अंदर ही उसके सर ने उनको घर से भी निकाल दिया। बट देर आर द लॉट ऑफ द सिनेरियो, लेकिन उसने 10,000 करोड़ का शेयर लेने के बाद ही हैज कि पापा दिस कंपनी बिलोंग टू कंपनी एंड वी कैन नॉट प्रोवाइड टू यू, और उसको घर से निकाल दिया गया और वो रोड पर आ गया। तो राइट नाउ ही इज फाइटिंग द लीगल केस, एंड आफ्टर द legal case after I think 5 to 6 years he got the some space कि हाँ आप यहाँ पर accommodate हो सकते हो, ऐसे करके कुछ डिसीजन आया है। बट he has to face कि जो 10,000 करोड़ का प्रॉपर्टी का बंदा है वो एक रेंटेड हाउस में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा उसे। तो दैट इज द रीजन बिकॉज उसने अपने जीते जी ही सारे प्रॉपर्टी ही हैज ट्रांसफर टू हिज किड्स और विल के थ्रू नहीं किया। तो दैट इज द बिगेस्ट इशू ऑफ विल। एंड we have seen the another family रतन टाटा ग्रुप जो कि 100-150 साल से they are doing the business, but we have not seen any dispute in their family. Reason is that they have created very good succession plan, they have written each and everything documentation in the will in succession, so nobody in family is getting the any dispute. So that we have to understand कि हम अपना घर का पैसा और रेपुटेशन को बर्बाद करना है या संभाल के रखना है। 3 to 4 years back it was the problem like corona में we have lost the lots of the unexpected person जो एकाएक हो गया। nobody was thinking कि जो 25 35 40 45 60 70 whatever the age, so we have never thought कि इस बंदे का कुछ हो जाएगा। we have lost lots of person। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन फ्यूचर वी आर नॉट अवेयर कि विच काइंड ऑफ द प्रॉब्लम वी कैन फेस। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आना है तो व्हाई नॉट बी प्रोटेक्ट।
Suppose our future is uncertain. Right now, I am providing the session to you, and suppose that some earthquake has come, might be possible building has demolished. Building is demolished, so I will be not survival. So future is uncertain. So it is the protection. How I can protect my family, how I can protect my asset, so that my family will be very happily. Okay, so that is the only one solution, that is called how we can make the protection to my family. That is the one solution, that we have to make the succession plan. We have to write the will. तो तो अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं कि when we have will or we don't have will, तो how will be the distributed my asset. Suppose that any male is not survival. Any male, there is X and who has died in accident or he has lost life. Any cases. Okay. If he has written will, if he has written will and in will he has given the whole property to his kids spouse, तब तो कोई बात ही नहीं है. अगर will is valid and every element, effective element is available in will and no one is challenged that particular will, the whole property will be distributed as per will. चाहे वो अपने बच्चे को दे दे, अपने वाइफ को दे दे, या किसी हॉस्पिटल को दे दे, या किसी ट्रेबल को दे दे, या 50-50 कर ले, वट एवर द वे ही हैज रिटेन इन विल, उसके अनुसार डिस्ट्रीब्यूट. क्वेश्चन arises when you don't have will. Suppose that I don't have will. ठीक है, तो what will happen कि मिस्टर एक्स जो नहीं रहा दुनिया में, तो उसके प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा एक मदर में, एक वाइफ में और उसके सारे बच्चे में. सपोज दैट आई हैव मदर, वाइफ, तो मदर और वाइफ तो वन वन होगी, इसमें तो कोई क्वेश्चन है नहीं. नाउ आई हैव टू किड्स, आई कैन बी 3 kids, आई कैन बी 4 kids, आई कैन बी 5 kids और आई कैन बी 1 kids. तो सपोज दैट अगर मिस्टर एक्स का डेथ हो जाता है एंड ही हैज मदर, वाइफ एंड 1 kids, तो वट एवर आई हैव द प्रॉपर्टी विदाउट विल, मेरा जो प्रॉपर्टी है मदर, फादर, मदर, वाइफ और बच्चे में 3 डिवाइडेड में होगा. सपोज दैट आई हैव 2 kids, तो मदर का 1 पार्ट होगा 25%, वाइफ का 25%, मेरे दोनों बच्चे का 25% होगा. तो वट एवर वी हैव किड्स उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा मदर, वाइफ और बच्चे. लेट्स एज्यूम मेरी मदर का देहांत हो चुका है. सपोज दैट मिस्टर एक्स का जो डेथ हुआ था, तो ही हैज लॉस्ट हिज मदर 2 years बैक. तो नाउ वाइफ और बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट होगा. अगर मदर और वाइफ का भी डेथ हो चुका, तो वट एवर ही हैज द प्रॉपर्टी, तो दैट प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड only with kids. Now question arises sometime कि मदर भी नहीं रही, वाइफ शादी हुआ था और डेथ हो गया, और उसके कुछ दिनों के बाद इसका डेथ हो गया. देन मदर भी नहीं है, वाइफ भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है. देन माय होल प्रॉपर्टी विल गो टू माय फादर. माय होल प्रॉपर्टी विल गो टू माय फादर. अब समहाउ माय फादर भी नहीं रहे, तो फिर मेरे सिबलिंग पर जाएगा, जो मेरे भाई बहन है अपने ओन. इफ देर इज नो सिबलिंग, सपोज दैट आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माय फैमिली, ओके, तो व्हाट विल हैपन कि मेरे जो ताऊ जी, मेरे फूफा जी, फूफा जी, उसके फैमिली में जाएगा. इफ देर इज नो इन माय ताऊ जी, ताऊ जी फूफा में कोई नहीं है, देन इट विल गो टू माय मैटरनल साइड, लाइक माय, मेरे नानी घर तरफ से जाएगा. ओके, तो फर्स्ट हक, इफ आई डोंट हैव द विल, मदर, वाइफ एंड चिल्ड्रन. इफ there is missing one person, like mother is, I have lost mother, so the whole property will be distributed in wife and children. इसी तरीके से मदर और वाइफ नहीं है तो चिल्ड्रन पर जाएगा. मदर, वाइफ, चिल्ड्रन कोई नहीं है, then this property will be given to my father. If also there is no father, okay, I have also lost my father before my death, then this property will be distributed in male sibling, मेरे जो भाई बहन है, अपने भाई बहन. If there is no sibling, then जो कजन, चाचा जी का बेटा या बुआ का बेटा है, वहां पर जाएगा. इफ देर इज नो चाचा जी, नो बुआ जी, देन इट विल गो टू माई मैटरनल साइड, मतलब इट विल गो टू माई नानी घर साइड, मामा मामी, मौसा मौसी की तरफ जाएगा. तो जो भी जिंदा रहेगा वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. नाउ क्वेश्चन है राजेश फॉर फीमेल. सपोज दैट देर इज वन फीमेल, मिसेज ए, और वो शी वाज वर्किंग एंड ही हैड द शी हैड द प्रॉपर्टी ऑफ अराउंड 5 CR and she has lost. हार्ट अटैक आया, वो नहीं रही दुनिया में. देन फर्स्ट राइट ऑफ होल प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर फीमेल is her children and husband.
अगर उसके चिल्ड्रेन और हस्बैंड है तो एवरी प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर टू चिल्ड्रेन एंड हस्बैंड इक्वल जाएगा। लाइक दो बच्चे हैं और हस्बैंड है तो 3 डिवाइडेड होगा, 4 बच्चे हैं हस्बैंड है तो 5 डिवाइडेड होगा, अगर एक बच्चा और हस्बैंड है तो 2 डिवाइड होगा। तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सपोज दैट married woman husband है but she has not done a plan of child, मतलब there is no child, okay, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी हस्बैंड को चला जाएगा। माइट बी पॉसिबल हस्बैंड भी पहले डेथ हो चुका था, बच्चे हैं ही नहीं थे, तो व्हाट विल हैपन कि वो हस्बैंड के फैमिली में जाएगा। अगर any there is any ladies or that ladies has no children, तो सारे की सारी प्रॉपर्टी हस्बैंड को जाएगा। सपोज दैट वो हस्बैंड का भी डेथ पहले हो चुका था, तो दैट हर प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर टू द हस्बैंड फैमिली। हस्बैंड फैमिली में उसके मदर फादर सिबलिंग सब आ जाते हैं लाइन से। इफ देर इज नो वन इन हस्बैंड फैमिली, तब जाके फीमेल के मायके साइड में जाएगा कि उसके मदर फादर या सिबलिंग पर जाएगा। तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ देयर इज द एनी फीमेल एंड शी इज द मैरिड, तो उनको ये ध्यान रखना है कि व्हाट एवर शी हैज अर्न, तो एनी अमाउंट विल नॉट ट्रांसफर टू हर मायके साइड और हर मदर एंड फादर और सिबलिंग। every every penny will be transferred to the her husband side। लाइक पहले बच्चे को फिर हस्बैंड को, हस्बैंड और बच्चे नहीं है तो हस्बैंड के फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कि उसके मायके साइड जाएगा। तो इफ देर इज एनी फीमेल वर्किंग और उन्होंने विल ड्राफ्ट नहीं किया है, तो आई विल सजेस्ट कि ड्राफ्ट देयर विल। सो इफ यू वांट टू प्रोवाइड सम financial assistance to your father, financial assistance to your sibling, then it will be the grateful for you। And you will say कि मनीष आपने तो मैरिड का बता दिया, इफ देर इज ये वन फीमेल और मेल और वो मैरिड नहीं है, तो जस्ट वी टेक द एग्जांपल ऑफ फीमेल कि शी इज नॉट मैरिड या अभी 20-22 साल की हुई है एंड शी हैज प्लान टू मैरिड आफ्टर 1 year, और उससे पहले शी हैड अर्न द प्रॉपर्टी ऑफ द 1 year। इट इज द पॉसिबिलिटी इन दैट सिनेरियो हस्बैंड की बात ही नहीं आएगी, चिल्ड्रन की बात ही नहीं आएगी। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी, क्योंकि जब हस्बैंड और चिल्ड्रन ही नहीं तो ससुराल का देयर इज नो सेंस ऑफ द ससुराल, देयर इज नो सेंस ऑफ द हस्बैंड फैमिली। तो एवरी प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर इन द फादर साइड। लाइक मेरे माँ बाप हैं वहां जाएगा या फिर मेरे जो भाई बहन है वहां जाएंगे। अगेन इन केस ऑफ द मेल कि आई एम नॉट मैरिड, मैं मैरिड ही नहीं हूँ, तो मेरी जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट कहाँ जाएगा, मदर को, वाइफ को, चिल्ड्रन को। तो आई एम नॉट मैरिड तो वाइफ और चिल्ड्रन की तो कहानी खत्म होगी, तो सारी प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर टू माय मदर। और अगर मदर भी नहीं है तो फादर को जाएगा, फादर नहीं है तो सिबलिंग को जाएगा। सीधा सीधी कहानी ये है। तो दैट इज द सेम सिनेरियो वेदर इट यू आर द मैरिड और नॉट मैरिड। अगर मैरिड हो तो फर्स्ट सेकंड कंडीशन में आएगा, अगर मैरिड नहीं हो तो सीधे लास्ट कंडीशन में आ जाता है। तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस कंडीशन में क्या आएगा। तो टिल टाइम इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन कि how asset is the distributed, whether will is available, will is not available, if you can ask any question, it's okay, otherwise I will provide the some tips to you कि लाइक मेरा बैंक एफडी है, मेरा म्यूचुअल फंड है, मेरा रियल एस्टेट है, तो हाउ इट विल ट्रांसफर टू माय किड्स। सपोज दैट मेरे बैंक में रखा हुआ है 10 लाख रुपया एज ए बैंक एफडी, तो आई एम नॉट in world, so how my kids can get that 10 lakh rupees from my bank। तो बैंक को जाएंगे, बैंक में जाने के बाद बैंक कैन आस्क द डेथ सर्टिफिकेट और देयर आर द लॉट्स ऑफ द फॉर्मेलिटी। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि राइट नाउ एवरीवन हैज द बैंक। बैंक में पैसे होते हैं, डिमेट में पैसे होते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे होते हैं, रियल एस्टेट मेरे नाम का है, तो हाउ इट विल ट्रांसफर टू अदर पर्सन। तो टिल टाइम if you have any question you can ask, otherwise फिर मैं आगे मूव करता हूँ। तो if you have any question तो please you can ask। No question, Manishi, but it is important now to Yeah, make the will now. yeah। So first of all you have to understand कि suppose that I am doing some business and my next generation is not interested in that business। Suppose that I have the restaurant business और मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आई वांट टू सेटल कनाडा, आई वांट टू सेटल आउट ऑफ इंडिया, और आई वांट टू सेटल इन बेंगलोर एंड आई वांट टू स्टार्ट आईटी कंपनी। I cannot involve in your restaurant, I cannot sell the chole kulche, chole bhature, okay।
तो when your next generation is not interested in your business, तब आपको सक्सेशन प्लान करना कि whatever you have given your time or effort to create that particular business empire, तो how you will sold out, how you will work कि वो बच्चे या तो उस बिजनेस में किसी तरीके से आ जाए, या फिर अगर इफ किड्स इज नॉट इंटरेस्टेड, तो हाउ यू विल सेल दैट पर्टिकुलर बिजनेस, ताकि वहां से ज्यादा प्रॉफिट आ सके और यू कैन प्रोवाइड द लिक्विड मनी टू योर किड्स. Another, kids want to settle abroad. अगर कहते नहीं जी मैं तो इंडिया में नहीं हूँ, सपोज दैट आई एम डूइंग द जॉब एंड आई हैव द टू प्रॉपर्टी, वन प्रॉपर्टी इन इंडिया, one property in Delhi and another property in Bangalore. My both kids is interested to settle abroad. So now, if and they have taken decision ki they will never return in India, and I have kept that particular asset in my name, so it will create the problem for my kids. Or you can take the another example. Yeah, I have two kids. One kids want to stay in India, and one kids want to settle outside India. And I have transferred the both asset to one asset to one son who is residing with me or who is residing in India, and I have transferred the another asset who is the settle outside India. So what will happen? जो outside India है, if he want to sell that property, so he has to come India and he has to give at least 2 and 3 months to selling that property. If I'm aware and he has given the expression ki Papa, I don't want to come India, and whatever do you have the property, please distribute before going from world. Okay. So what I have did कि मेरी दोनों प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 CR है. लेट्स एज्यूम, जस्ट आई एम टेकिंग फॉर द सिंपल कि 1 CR की प्रॉपर्टी है, एंड आई हैव द another you can say uh, 1 CR या 1.5 CR का फिनेंशियल असेट है, लाइक सम म्यूचुअल फंड है, सम बैंक एफडी है, एंड आई हैव द सम शेयर्स. व्हाट आई डिड, मैंने बोला कि भाई तुम लोग दो भाई हो, तो जो इंडिया में है उसको आई विल ट्रांसफर द माय मूवेबल असेट टू माय टू दैट सन जो इंडिया में रहना चाहता, बिकॉज ही वांट टू सेल एनी टाइम, तो ही कैन सेल. एंड यू आर आउटसाइड इंडिया, तो वट एवर आई हैव द शेयर्स, म्यूचुअल फंड, एफडी, वो मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूँ. तो सपोज दैट 1 CR का टू टू होम मैंने दोनों एक बेटा को कर दिया, 2 CR का जो एफडी और XYZ है वो मैंने अब्रॉड वाले बेटे को कर दिया. तो व्हाट विल हैपन कि आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द होल मनी इन द इक्वल अमाउंट, इक्वल में मैंने ट्रांसफर कर दिया. एंड अनदर थिंग, आई हैव डिड वेरी यू कैन से द इजी वे, क्योंकि बाहर वाले को इंडिया बेचने के लिए आना नहीं पड़ेगा. नाउ ही वांट टू सेल द शेयर्स, म्यूचुअल फंड और एक्सेट्रा ऑल दोस थिंग, दैट इज वेरी इजी. वहां से एक इंटरनेट पर दे विल गिव द इंस्ट्रक्शन, वहां से ही हो जाएगा. ओके. So that will be the very, so that we have to make the plan. When kids is not interested in my business, kids want to settle outside India, and I want to give the loan to anyone. Suppose that I want to give कि मैं अपने sibling को, suppose that my younger brother is not so economically strong, and I want to help कि भाई मैंने पूरे लाइफ में मेरे पास सपोज दैट आई हैव द टोटल फंड 5 CR, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने छोटे भाई को 10 लाख रुपया 25 लाख रुपया दे के जाऊं. तो यहाँ पर अगेन यू नीड द विल, अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि होल प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर टू माय किड्स. तो माय किड्स विल नॉट गिव एनी शेयर टू माय brother, my sibling. So if I want to protect my protect wish, wish of me, of mine, or I want to protect anyone survival, like my sibling, my friend, my family member, so I have to draft will. इक्विटेबल शेयर में क्या होता है कि आफ्टर 2006 every daughter and son are equitable. Before that 2006 से पहले it was the decided, it was the deemed कि भाई बेटी का कोई हक नहीं होता है, वट एवर आई वांट टू गिव या नहीं देना है, दैट्स अनदर पार्ट, सब सारा प्रॉपर्टी बेटे का होता है. बट आफ्टर 2006 एवरी प्रॉपर्टी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेबल बिटवीन सन एंड डॉटर. तो सपोज दैट आपने विल नहीं लिखा, तो व्हाट विल हैपन, सपोज दैट यू हैव नॉट रिटन विल, तो एज पर विल, एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो वट एवर यू हैव द प्रॉपर्टी, बेटा और बेटी दोनों में बटेगा. ओके. लेकिन यू हैव रिटन द विल and you have drafted in a such a way, in a such a language, जहां पर आप अपनी बेटी को किसी तरीके से आउटसाइड कर देते हैं और यू कैन ट्रांसफर द होल प्रॉपर्टी टू योर किड्स.
योर सन। तो यहाँ पर यू हैव टू थिंक कि मुझे विल ड्राफ्ट करना है या नहीं करना है। Disproportionate distribution. Suppose that you have the three kids, two son, one daughter. So you want to give the 20% to daughter or 40% to your son. When you have not drafted will, then it will use a transfer one third, one third, one third. But if you want to disproportionate distribution of will, then you have to draft your will. डोनेट और हेल्प। सपोज दैट आई हैव वन ड्राइवर और मैं चाहता हूँ यार इसने मेरे को ही हैज गिवन द 10 years 15 years टू मी, और आफ्टर गोइंग मी माय किड्स विल नॉट इवन प्रोवाइड एनी जॉब टू माय ड्राइवर। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं उसको, अगर इफ आई हैव द टोटल प्रॉपर्टी ऑफ द 5 CR एंड आई हैव गिवन द 10 लाख रुपीज टू माय ड्राइवर, तो एटलीस्ट ही कैन परचेज एनी कार, और उस कार से ओला उबर या कोई टैक्सी चला के या कुछ भी, और इवन आई हैव गिवन द 10 लाख रुपीज, तो ही कैन स्टार्ट एनी बिजनेस। कौन सा बिजनेस करे उसका नहीं। तो इफ आई वांट टू मेक डोनेशन, आई वांट टू हेल्प समवन, तो आई हैव टू ड्राफ्ट माय विल एंड आई हैव टू स्पेसिफाई दैट डोनेशन, आई हैव टू स्पेसिफाई दैट हेल्प, कि मुझे इसको कुछ डोनेट करना है। इफ आई हैव नॉट, आई एम 100% श्योर कि माय किड्स विल नॉट गिव एनी अमाउंट टू एनीवन। ठीक है, इवन दैट इज द नॉर्मल सिनेरियो। सपोज दैट आई हैव गॉट द 1 CR, why I will make the payment to my पापा ड्राइवर और XYZ, मैं तो नहीं करने वाला। तो भले ही कोई अपना एनी वन कैन से कि नहीं नहीं आई विल डू, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वंस द मनी इज कम, ठीक है, जब पैसा आता है तो सारे नैतिकता भूल जाते हैं। तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ वी वांट टू हेल्प, चाहे वो ब्रदर हो, ड्राइवर हो, नौकर हो, और एनी वन, और यू वांट टू डोनेट टू सोसाइटी की किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में, किसी हॉस्पिटल में, और एनीथिंग, तो यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, अदरवाइज योर विश विल बी wish and that will never fulfill। Mutation of property, there is a one property in my name, so once I have written the will and I have the make the this property will belong to my son 1 son 2, so according to that the property will be, and that will is the valid, there is no dispute, so that property will be easily transferred to my legal heir or my to whom I have make the succession plan। शेयर ट्रांसफर, म्यूचुअल फंड ट्रांसफर में भी इजी होता है, तो दैट वी विल डिस्कस। डिवोर्स और डेथ ऑफ द किड्स, सपोज दैट आई हैव रिटन द विल एंड in the today scenario we are seeing the divorce is a very easy thing in case of the daughter, in case of the son, okay। तो suppose that I have daughter on शादी के 3-4 साल के बाद she got divorce, तो if I have transferred the whole property to my son, then it will create the problem for my daughter, because जब वो डिवोर्स हो गया and she had taken decision कि now she will not remarry, तो or she is not working, if she is working, even that she needs some she need part some part or equal part in my property, so that we have to understand कि if there is a divorce, there is the death of the kids or spouse XYZ, so how I can distribute my asset, bank account and FD, so that or everything we have to understand। If there will be the dispute or you have not created will, so it will create problem of the M MLRT, that is the money you will lose money, you will have the legal harassment, you will lose your reputation, and again you will lose your time। So as you are making the KYC with every share broker, every bank or everything, you have to create just KYW. Whatever you have the wealth, whether it can be fixed deposit, whether it can be bank account, whether it can be uh, real estate, whether it can be gold, anything. Just you have to make your list. So know your wealth. Whatever you have the wealth, you have to write on the one place कि आपका wealth क्या है और what is the list। Then you will understand कि आपका लिस्ट ऑफ वेल्थ क्रिएट करना है। लीगल टाइटल, सपोज दैट आई हैव क्रिएटेड वन वेल्थ लिस्ट, जहां पर आता है कि देयर इज द वन प्रॉपर्टी, देयर इज द वन प्रॉपर्टी इन नेम ऑफ माय दादाजी, तो व्हाट विल हैपन कि यार दादाजी से पापा पर आएगा, माय फादर इज द 4 ब्रदर, तो वहां से फिर तो एज द लीगल टाइटल ऑफ द माय दादा, ओके 1 CR की प्रॉपर्टी मेरे पास आते हैं तो 20 लाख का ही बचेगा। इफ दैट प्रॉपर्टी
will have the belong to my father, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाती है. तो दैट, so we have to understand who is the legal title of asset, who is controlling asset. सपोज दैट मेरे पापा के नाम पर है, बट मेरे ताऊजी ने उसको कब्जा कर रखा है, and I have purchased one flat, one land in the Greater Noida or anywhere in India, and that was the purchase 10 years back, and आज वहां पर देखने गया तो किसी ने कब्जा कर रखा है. ठीक है, बस. तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लिस्ट ऑफ वेल्थ, उसका लीगल टाइटल कहाँ है, कंट्रोल किसके पास है, एंड व्हाट इज द टुडे फेयर मार्केट वैल्यू. और फेयर मार्केट वैल्यू इफ इट इज द इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड दैट मार्केट बिकम द सैचुरेटेड, so whether I have to sold, whether I have to keep, so there are the lots of the things you have to understand. Now, that is the we can have the wealth like real estate, FD, gold, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, डिजिटल असेट, इंश्योरेंस. इस तरीके से बहुत सारे इश्यूज हैं जहाँ इंस्ट्रूमेंट है वेयर वी कैन create our investment. Now question arises bank account. Suppose that Mr. X has lost. अब उसके बैंक अकाउंट में 2 लाख 5 लाख है. तो every bank has the facility of the nominee. The nominee, I will say, suppose that उसने अपने nominee father को बना रखा है and he has the wife and kids. तो क्या ये पैसे उसके फादर को मिलेगा या उसके बच्चे को, वाइफ को मिलेगा? तो नॉमिनी इज कंसीडर एज द कस्टोडियन. कस्टोडियन मीन्स कि उसको पैसा दे भी दिया जाएगा, बट ही विल बी नॉट लीगल लीगल होल्डर, और लीगल फादर विल नॉट हैव द लीगल टाइटल ऑफ दैट मनी. मतलब अल्टीमेटली, ठीक है, पापा के नाम पर अगर जाता भी है, इन स्पाइट ऑफ दैट ही हैज टू ट्रांसफर होल मनी टू माय किड्स, होल मनी टू माय स्पाउस, or if it is the nominee. But once I have the will, and after will, my wife and my kids got the legal here certificate. The legal here certificate, once they have the produce, so that money will not transfer to my father account. That money will be transferred to my kids. That money will be transferred to my wife. So will is important to create uh, legal here, and bank account is the transfer mostly as per the nominee or as per the legal here. So in case of the death, bank mostly ask nomination and the legal here certificate or NOC from the whole family. तो ये आपको एक इम्पोर्टेंट चीज समझना है. तो दिस इज द वन टिप्स आई कैन प्रोवाइड टू यू कि in every account, if you have created the joint account, like आपने अपने वाइफ के साथ joint account बनाया हुआ है, and you are not involved, suppose that I have the one account where me and my wife is the joint holder, और मैं किसी कारण से नहीं रहता, तो what will happen, उस अमाउंट का सारा पैसा मेरे उसका लीगल टाइटल किसके पास चला जाएगा, मेरे वाइफ के पास चला जाएगा. सो इट इज द एडवाइजेबल टू कीप banking account with nomination facility as well as the joint account. If there is you are finding ki I'm getting ill, or and now I am the age of the 65 70, so then it will create the problem, and this can be any time. This can be any time at the age of the 28 25 35 40 any time, right? लेकिन जो चीज हो सकता है, तो if it is the possible nominee, you have to provide the right kind of the person, and if it is the possible, go for the joint account. Demat and mutual fund. Once you have the demat account, and that will not transfer as per nominee, that is the transfer as per the legal here certificate. Suppose that I have the nominee of my father or my friend or my sibling, but my wife is providing the legal here certificate as per the will or etc. So demat account and mutual fund will be transferred to my wife. So I will suggest ki before in bank account, in demat account, in mutual fund, if it is the possible, no, make nominee your kids, make nominee of your spouse, if it is the possible. If suppose that it is not possible, you want to nominee as your father, your sibling, anyone, so you have to draft will, and after your death, your legal here will get the legal here succession certificate or as per that certificate, bank account or demat account or mutual fund will be transferred to you. There is the one thing, gold. In everyone house, gold is available. Like there is some chain, there is some necklace, there is some ring. तो यहाँ पर there is no legal here legal transfer as per the government of India. आपके घर में है, गोल्ड है, वो आप खुद लड़ झर के तैयार अपना हिसाब कर लो कि भैया बीवी को कितने देना, बाप को कितने देना, भाई को कितने देना. यहाँ पर there is no need of the will. हाँ, will है if it is the written.
there is the three necklace, and a whole necklace, all necklace will be transferred to my wife, to my spouse, or one necklace will be transferred to my spouse, one or two necklaces will be transferred to my daughter-in-law, then it's okay. But गवर्नमेंट के तरफ से देर इज नो क्लाउजेस कि जहां पर आपको कोई गोल्ड का रजिस्ट्रेशन कराना है, दैट्स वाई. बट इन केस ऑफ द म्यूचुअल फंड, डीमैट, देर इज द, इन केस ऑफ द बैंक अकाउंट, विदाउट लीगल हियर सर्टिफिकेट, विदाउट विल, they will not transfer make the money in your account, या जो सर्वाइवर अकाउंट है उसके. बट इन केस ऑफ द गोल्ड, यहाँ तो आपको खुद ही डिसाइड करना है, जितने गोल्ड है खुद अपने अपने डिस्ट्रीब्यूट कर लो, मारपीट कर लो, लड़ाई झगड़ा कर लो, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है. और यू कैन ड्राफ्ट योर विल, जहां पर यू कैन प्रोवाइड ईच एंड एवरी गोल्ड. ये दिस रिंगर finger ring has to transfer son one, that necklace has to transfer daughter one, daughter-in-law, that necklace has to transfer to daughter, and two other gold has to transfer my spouse. So that we have to make the real estate. In case of the real estate, suppose that one flat in my name, मेरे नाम पर है, and after me, my son want to sell, तो उसके लिए पहले उसको अपने नाम पर ट्रांसफर कराना पड़ेगा, तो that will create the problem. So once you have the will, तो according to will, जो आपका रजिस्ट्रार है, जहां पर आपका तहसीलदार जो बोला जाता है, तो दे मेक द ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन योर लीगल ईयर नेम, लाइक वाइफ, बच्चे जिसके नाम पर भी यू वांट टू ट्रांसफर योर रियल एस्टेट. तो इफ इट इज नॉट, देन इट विल बी द बिग प्रॉब्लम, क्योंकि वहां से आपका रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है, फिर लीगल ईयर करना होता है. तो लीगल ईयर कैन बी क्रिएटेड विदाउट विल, बट if it is the will available, then it is the easy. And suppose that there is a two property, one property in Bombay, one property in Delhi, and if there is no will, so what will happen ki if you have two sons, तो दोनों प्रॉपर्टी में आधा आधा हक चला जाएगा. बट यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, लाइक वन सन इज रिजाइडिंग इन बॉम्बे, और यू वांट टू गिव दैट प्रॉपर्टी टू बॉम्बे सन, ओके. तो इफ यू हैव रिटेन, तो वो बॉम्बे वाला प्रॉपर्टी बॉम्बे सन जो बॉम्बे में रहता है उस बच्चे को दे दिया जाएगा, और एनी another property who is in Delhi, तो वो दिल्ली वाले बच्चे को दे दिया जाएगा. तो दैट यू हैव टू क्रिएट. तो नाउ इट इज द एंड ऑफ माय सेशन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू विल एंड हाउ asset like mutual fund, real estate, bank, anything is distributed to you after to your family after you. If you have any question related to that, you can ask, and I request to Samana ji to stop live.